statistics in our 12th standard, there are two parts. Part 1 will be asked in 48 marks, right? Now, today we are going to start part 1 and first chapter in part 1. The name of chapter is index number. You can see on your screen. I'm really sorry today I'm unable to prepare PPT. Is known as economic barometer. It is a barometer. ये एक barometer है friends. Barometer क्या होता है? I hope आप सबको पता होगा. See friends, basically this chapter is asked in economics. ये economics का एक chapter है. CBSE बोर्ड में इंडेक्स नंबर इकोनॉमिक्स में पूछा जाता है एंड गुजरात बोर्ड में इंडेक्स नंबर स्टैटिस्टिक्स में पूछा जाता है, राइट? इसकी थियरी भी बहुत सारी है फ्रेंड्स, बट we have a limited content. Now, index number is also known as economic barometer. Why it is called economic barometer? Because it is used for the measurement of prices, changes in the prices, changes in the quantity, right? And changes in the overall value, right? It is used for the changes in price, changes in quantity, as well as overall changes in the value. Friends, अगर मैं बात करूं तो किसकी प्राइस की? सो प्रोडक्ट की प्राइस, राइट? नेशनल इनकम में जो चेंजेस होता है, बर्थ रेट, दैट डेथ रेट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, राइट? यस और नो? So all this changes, whatever changes is to be happen in our economy, all such changes, all such changes generally, all the factors of economic, जितने भी economic के factors है, purchase, sales, income, this index number, it is based on timing. Time is one of the most important factor for this index number, right? And quantity of an item with respect to changes in time. Means डे बाय डे ग्रेजुअली जैसे टाइम चेंजेस होगा, उसी तरह से किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस एंड उसकी क्वांटिटी में जो चेंजेस होगा, such changes is to be measured with the help of index number. फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, whatever changes is to be made in the price, right, according to timing, right? So whatever changes is to be made, such changes can be measured with the help of index number. किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस में, सपोज प्रीवियस ईयर के कंपेयर में करंट ईयर में अगर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस में जो चेंजेस हो रहा है, सो such changes can be measured with the help of this index number, right? And friends, it is not measure the price only, it is also measure quantity also. It is also useful for the measurement of quantity with respect to changes in timings. Time in the sense friends, डे बाय डे हमारा जो ईयर है, राइट, मंथ वाइज, वीक वाइज, ईयर वाइज हमारा जो टाइम स्लॉट है वो चेंज होता जाता है. सो अकॉर्डिंग टू टाइम, वॉट एवर फ्लक्चुएशन हैज बीन डन, right, whatever fluctuation is to be done in the economy, all such changes is to be measured with the help of index number, right? Now इंडेक्स नंबर का यूज जनरली कहाँ पे होता है फ्रेंड्स? सो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, इनकम, नेशनल इनकम के लिए, कंट्री में कितना डेथ रेट है, कितना बर्थ रेट है, कंट्री का इन्फ्लेशन रेट कितना है, कंट्री का डिफ्लेशन रेट कितना है, इन सब चीजों को मेजर करने के लिए हम इंडेक्स नंबर का यूज करते हैं. यू कैन से, आप ऐसा भी बोल सकते हो फ्रेंड्स, इंडेक्स इट्स अ डिवाइस ऑफ इकोनॉमिक्स. इट इज अ इकोनॉमिक डिवाइस. इट इज वन ऑफ द वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. ये इकोनॉमिक्स का बहुत स्मॉल पार्ट है, राइट? कविता नाम की एक स्टूडेंट, सी बेसिकली व्हाट इज गिवन इन दिस चैप्टर, अब मैं अभी तक मैंने जो भी आपको एक्सप्लेन किया, दैट इज अ वेरी स्मॉल एंड ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन. जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे.
जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट करके ऊपर हेडिंग दिया हुआ है. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू अ डेफिनेशन. एक्चुअल डेफिनेशन क्या है इंडेक्स नंबर की? इंडेक्स नंबर मीन्स percentage changes in the value of any product or any item for the current period compared to its base period is called index number. Now friends, before I will explain this definition, इस definition को मैं थोड़ा सा break करता हूँ. See, one thing is very clear. Index number always calculated in terms of percentage. हमें index number का जो calculation करना है, that is always in terms of percentage. Index number आप जब भी calculate करोगे, वो percentage में होगा, right? This is the first thing. Second thing is, it is calculated with the help of two or more than 2 years information. You can calculate index only whether you are having information of at least more than 1 year. अगर आपके पास 1 साल या 1 साल से ज्यादा की इंफॉर्मेशन है, तो ही आप इंडेक्स नंबर को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. क्यों? बिकॉज इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कंपेरेबल डेटा होना चाहिए. फ्रेंड्स, कंपेरेबल मींस व्हाट? आप करंट ईयर के डेटा को प्रीवियस ईयर के डेटा के साथ कंपेयर कर सको, तो ही आप इंडेक्स नंबर इजीली कैलकुलेट कर सकते हो. सो with the help of this index number, you can get the idea that how much exact percentage change in the value of any product. Yes or no? So for that, you need two things. Number one, comparable information first. And second, whatever answer you will get, that is always in terms of percentage. आप देख सकते हो definition आपकी screen पे. Percentage change in the value of any product or any item for the current period compared to its base period. Now friends, what is the meaning of base? Base period means it's a previous year. Current year means latest year, जो year अभी चल रहा है, that is called current year, and previous year is known as base. Current year जो चल रहा है उसका base क्या होगा? Base. Say for example, this is the year 2020, 2020, right? So 2019 means 2019, it's a base year. In the same way, 2021, it's a current year, so 2022, it's a base year. Yes or no? We can say that preceding year of any particular year is called base year. Yes or no? And one more thing friends, in this chapter we should indicate base year by zero. हम base year को zero से represent करेंगे. We should indicate base year as a zero and current year it is indicated by 1. हम current year को 1 से indicate करेंगे friends and base year को 0 से indicate करेंगे. Yes or no? So friends, this is the only important information for you. This is the theory portion for you guys, right? So please write down these things in your right? Number one, number, right? You can see on your screen. First is price index number. Second one is quantity index number, and the third one is value index number. Now, friends, what does it indicates? ये जो तीनों indexes है, ये क्या indicates करते हैं? आपको नाम पर से idea आ रहा होगा, friends. Generally, price index number, it indicates the percentage changes in the price. Means whatever changes in the price of different year, all those changes represented by this index number, price index number, right? Second one is quantity index number. Now friends, quantity index number means what? It indicates the changes in the quantities, whatever changes in the quantities of the product, right? It is represented by this quantity index number. And the third one is value index number. Now what is the meaning of value index number? So let me inform you. Value index number, it consists price index and quantity index both. I mean, value index, it is the
result of value index, it is the result of the multiplication of price and quantity, right? ये तीनों टाइप को मैं फर्दर आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा आपको डिटेल में, बट बिफोर दिस आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर. सी फ्रेंड्स, हमारे पास मेनली दो मेथड्स हैं. नंबर वन, सिंपल मेथड, दैट इज आल्सो नोन एज अनवेटेड, एंड सेकेंड वन इज वेटेड मेथड. इंडेक्स के प्रैक्टिकल सम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो मेथड है. नंबर वन सिंपल एंड नंबर टू वेटेड. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली सिंपल मेथड, मींस अनवेटेड मेथड. अब आप देख सकते हो फ्रेंड्स अपनी स्क्रीन पे, सिंपल मेथड को भी बाइफरकेट किया हुआ है, राइट? फर्स्ट वन इज सिंपल एग्रीगेटिव मेथड and second one is simple average of relative method. It means one is aggregative method and second one is relative method. Once again, simple method is also bifurcated in two parts. Number one, simple aggregative method, and second one is simple relative method, means relative method, right? Now see friends, after this you can see प्राइस इंडेक्स नंबर इज गिवन. आपको नीचे प्राइस इंडेक्स नंबर दिया होगा. अब मैं आपको प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहा हूं. जनरली प्राइस इज रिप्रेजेंटेड बाय पी. हम प्राइस इंडेक्स नंबर को पी से इंडिकेट करेंगे, राइट? सो पी इज इक्वल टू, आप पी के पास में देख सकते हो फ्रेंड्स 0 एंड 1 लिखा हुआ है. तो मैंने आपको समझाया था फ्रेंड्स, 1 इट इज इंडिकेटेड फॉर करंट ईयर. करंट ईयर को हम किससे इंडिकेट करेंगे? 1 से. एंड बेस ईयर यानी कि लास्ट ईयर को हम किससे इंडिकेट करेंगे? 0 से. यस और नो? सो फ्रेंड्स, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंडेक्स नंबर. सिग्मा P1 divided by sigma P0 into 100. This is the formula of price index number. Once again I am repeat, sigma P1 divided by sigma P0 multiply by 100. This is the formula of price index number. आप नीचे explanation देख सकते हो friends. Sigma P1 is equal to price of current year and sigma P0 is equal to price of base year. Base year means past year. Past year means last year. Means say for example 2020 it's your current year. So आप current year को 1 से represent करोगे और current year के price को P1 से represent करोगे. So 2019 आपका base year होगा friends. So आप 2019 को P0 से represent करोगे. Okay. So this is the formula of price index number. This comes, ये formula जो price index number है ये सिंपल एग्रीगेटिव मेथड में आएगा, इसलिए मैंने ब्रैकेट में सिंपल एग्रीगेटिव मेथड लिखा है, राइट फ्रेंड्स? अभी हम जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो भी हम पढ़ेंगे आज, all formula it comes under the head of simple aggregative method. Okay, now please share the next page. इंडेक्स नंबर, ये भी प्राइस इंडेक्स नंबर का ही फॉर्मूला है फ्रेंड्स, बट द थिंग इज दिस इज अ रिलेटिव मेथड. ये कौन सा मेथड है? रिलेटिव मेथड है. मींस हम प्राइस इंडेक्स नंबर का ही फॉर्मूला ये रिवाइज करेंगे फ्रेंड्स. ये जो फॉर्मूला आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो दैट इज आल्सो अ फॉर्मूला ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर, बट द थिंग इज in this formula we are using relative method, right? We are using relative method. So friends, यहाँ पे क्या होगा friends? Your formula is sigma P1 upon P0 multiply by 100. इतना फॉर्मूला फ्रेंड्स हमने प्रीवियस पेज पे भी देखा, ये फॉर्मूला प्राइस इंडेक्स का था. बट यहाँ पे अब आप देखो फ्रेंड्स, डिवाइडेड बाय n किया हुआ है. नाउ फ्रेंड्स, व्हाट डू यू मीन बाय n? n means number of different items. n is equal to number of different items. So here P1 upon P0 into 100, whatever result we will get, that result will be divided by n. n stands for number of different item. n stands for number of different items. Yes or no? So friends,
This is the formula of price index number with the help of relative method. Now come to the next point. Your next point is, this is the next type, quantity index number. This is the second type of index. Now friends, quantity index number generally it is represented by Q. अब आपको फॉर्मूला आइडिया आ गया होगा फ्रेंड्स. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, करंट ईयर की इंफॉर्मेशन को हम हमेशा न्यूमरेटर में लिखेंगे एंड लास्ट ईयर की इंफॉर्मेशन को हम हमेशा बेस में रखेंगे, राइट? Remember one thing, in index number, this is very important. Amount or price of the current year, it is always divided by price of the base year. Once again, I am repeat. Price or quantity of the current year, it is always divided by price or quantity of the base year and multiply by 100. Friends, हम यहाँ पे 100 से क्यों multiply कर रहे हैं? I told you last time also. It is multiplied by 100 because the answer of index always comes in terms of percentage. Okay, now you can see generally quantity index number, it measures the percentage changes in quantity in current year compared to its previous. It is known as value index number. I told you last time friends, value index number is nothing but it's a product of price and quantity index. Value index number is nothing but it's a multiplication of price index and quantity index. फ्रेंड्स कुछ करना नहीं है, आपको प्राइस और क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करना है. प्राइस का मल्टीप्लिकेशन जब आप क्वांटिटी के साथ करोगे सो यू विल गेट द वैल्यू. आपको वैल्यू मिल जाएगी फ्रेंड्स, और वो जो वैल्यू आपको मिलेगी दैट इज व्हाट वैल्यू इंडेक्स नंबर. आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है I इज इक्वल टू, हाँ एक और चीज मैं भूल गया फ्रेंड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स का I. जनरली हम इंडेक्स नंबर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? I से रिप्रेजेंट करेंगे. I स्टैंड्स फॉर इंडेक्स नंबर. आप देख सकते हो I इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0. मैंने करंट ईयर के प्राइस का मल्टीप्लिकेशन बेस ईयर की क्वांटिटी के साथ किया है, राइट? आप न्यूमरेटर में देख सकते हो सिग्मा P1 Q0 divided by sigma P0 Q0 multiply by 100. So this is the formula of value index number. अब आप सोचोगे सर वैल्यू इंडेक्स नंबर को हम याद कैसे रखेंगे? मैं आपको एक ट्रिक समझाता हूँ फ्रेंड्स. वैल्यू इंडेक्स नंबर को याद आपको रखने की कोई जरूरत नहीं है. जब इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा तब मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, उस ट्रिक की हेल्प से आपको ये फॉर्मूला याद रखना है. फिलहाल आप ये फॉर्मूला सिर्फ एक बार समझ लो. हम इसको किस तरह से लिखेंगे, इसको लिखना कैसे है वो मैं आपको समझा देता हूँ फ्रेंड्स. आप सबसे पहले प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला लिखो. प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा? P1 अपॉन P0. यस और नो? P1 अपॉन P0. अब इस P1 अपॉन P0 को आप क्या करोगे? बेस ईयर की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे. आप देख सकते हो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में नाउ वी विल मल्टीप्लाई द प्राइस ऑफ करंट ईयर एंड बेस ईयर with the base year quantity. आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे P1 multiply by Q0 and P0 multiply by Q0. Yeah, P1 multiply by Q0 and P0 is also multiplied by Q0. So this is the formula of value index number, right? So friends, I request everyone, please